आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अभी तक जितने भी फिल्मों में या सीरीज में कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनको और उसमें उनकी एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया है। एंड इनफैक्ट द ईयर 2022 भी उनके लिए काम के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो यस, वी आर इन फॉर गुड एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्टर। बात कर रही हूँ टैलेंटेड एक्टर आशीष वर्मा की, जो इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले आशीष, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। Thank you very much, Nidhi. Thank you for having me. ओके तो जैसे कि मैंने कहा, आपके जितने कैरेक्टर्स हैं लोगों को काफी पसंद आए हैं, जितना आपने रोल अभी तक चाहे वो फिल्मों में किया हो, अभी जो लेटेस्ट रिलीजेस हुई है, जो लोगों को याद है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक तो विसल ब्लोअर और दूसरा अतरंगी रे। तो दोनों के बारे में इंडिविजुअली प्लीज अपने एक्सपीरियंस बताइए। Let me start with Atrangi Re because Atrangi Re की शूटिंग मैंने पहले चालू करी थी। अतरंगी रे आनंद सर के साथ काम करना तो बकेट लिस्ट में एक बहुत बड़ा टिक मार्क मेरे लिए है ही। It was always a dream to work with Anand ji because he's such a fine maker and the way he represents love on screen, I've not seen anyone do that. So when I got a call from Mukesh Chabra, he's the casting director, and Himanshu Sharma was the writer, that they were considering me for the part. Okay. So I had to pinch myself. Okay, so this is finally happening. There's a part of me which believes I manifested it. So when I got to be on set, he made me so comfortable with everyone, with Dhanush, with Sara, with Akshay sir, and it was like a family. And he's like the head of the family who's running the set. And मैं पहले भी बोलता हूँ कि half of the film for me was made behind the camera. अच्छा। Because उन्होंने इतना comfortable बना दिया मुझे कि वहां पे ही सारे एक्टर्स की केमिस्ट्री ऑर्गेनिकली कब आपस में बन गई। Dhanush was very nice to me. I had to play his best friend. The way he broke ice with me was like never happened before. कि एक सीन, मतलब हम बनारस में शूट कर रहे थे और वहां पे बहुत ठंड पड़ रही थी और मैं धनुष से पहली बार सेट पे मिला था तभी, और बिकॉज ठंड हो रही थी तो मैं थोड़ा शिवर कर रहा था। Okay. So Dhanush was wearing a blanket. So he called me and he offered me and we shared his blanket. So at that point the chemistry got so solidified. तो उसके बाद एक्टिंग करनी नहीं पड़ी, जो हो रहा था ऑर्गेनिकली हो रहा था अपने आप। सो हाँ, प्लस कोविड टाइम्स में शूट कर रहे थे, कोविड टाइम्स के पहले से चालू किया, फिर बीच में एकदम न्यू नॉर्मल आ गया, तो सबके थ्रू बचते बचाते वी ऑल शॉट लाइक अ फैमिली। सो दिस अतरंगी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑलवेज। करेक्ट। और अब जो रिव्यू आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, आपके रोल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो देन हाउ डज दैट फील कि वो पूरी मेहनत जो की, इतने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, इतने डिफिकल्ट टाइम में शूट करते हुए, सो इट्स ऑल पेइंग अप नाउ? I was pretty confident about it because I'm telling you, it was made with so much heart. वो पहुंचना था, and he's such a fine filmmaker. He handles these issues so delicately. So I'm not surprised that it is coming my way because um, I'm very glad that it's very heartwarming that people are reciprocating. People are giving the film a lot of love, especially my character also a lot of love, and very very thankful for that. ओके अच्छा, यहाँ पर जैसे बिगीज के साथ आपने काम किया और आपने जैसे कहा मैंने मैनिफेस्ट एक तरीके से किया है कि आनंद जी के साथ काम करना था, ऑफ कोर्स देन यू हैव धानुष एंड यू हैव अक्षय एंड सारा आल्सो। अब जैसे विसल ब्लोअर की बात करें तो वहां पर आपने एक ensemble कास्ट के साथ में काम किया है, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Whistleblower was they were so the director is a first time long format filmmaker. He's made a lot of ads, Manoj Pillai, brilliant filmmaker, and what energy. And a majority of my scenes were with actors who are my age or younger to me, like Ritvik, Ankita, and we all were hungry. We all wanted to prove we are capable, we can deliver at the big stage, and we are thankful for Sony to cast us. And there was a lot the collaboration of the highest level which was happening during Whistleblower. Okay, but सो जब एक बड़ी कास्ट के साथ या बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ शूट करते हैं, सो इज इट मोर कियोस या मजा ज्यादा आता है? नहीं. So I have been thankfully blessed enough to be with a bunch of co-actors who all are so secure. Everyone is just doing their part well. And if it's like a dance, we require 2 or 3 people to be in sync, right? Correct. So
everyone was in sync with each other. That was the best part. And together, that's how magic is created. Like, अगर usually what happens is काफी जगह पहले ऐसे हुआ करता था बहुत कि एक actor, if an actor is performing with an intention to shine, कि मैं scene को खा जाऊं, it does not work like that. You're as good as your co-actor. Correct. So you feed off each other, which was very nicely happening. Even in Whistleblower with Sonali ma'am, Sonali Kulkarni ji, Sachin sir, Sachin Khedekar sir, everyone were such givers. They were giving you so much to feed off them, to give them back, and together that's how beautifully the scenes were made. करेक्ट. एंड डू यू थिंक ये जो ट्रांजिशन सडनली, जैसे आपने भी कहा, ऑफ कोर्स, एंड वी एज ऑडियंस आल्सो फील, एक वक्त था जब हमें लगता था एक पर्टिकुलर एक्टर है जो सीन को खा रहा है, बाकी लोगों पे हावी हो रहा है, to now this transition where every individual in the story, no matter उसका कितना बड़ा और छोटा रोल है, वो important है और वो उसमें कहीं ना कहीं contribute कर रहा है. So how do you see this transition? And I think as an actor, तो you would say it's a blessing. Of course, it's a blessing because now the writing is also very evolved. Now the characters are not there. होने के लिए characters नहीं है, क्योंकि हमें पन्ने भरने हैं. हमें एक 100 पेज की स्क्रिप्ट बनानी है तो एक कैरेक्टर और लिख देते हैं so that जब तक हम मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचते तब तक एक आदमी आकर थोड़ा टाइम पास करके चला जाएगा. Thankfully, the writing has been evolving slowly with time. So everything which is on paper ideally should have a purpose to take the story forward, to enhance the emotional experience of the audience, which clearly has started to happen. And especially with the web explosion which has happened, like the web series, jahan par you don't have only 2 hours to tell a story. You have 8 hours, you have 10 hours. So all the characters are zinda characters. Hai. Every character is fleshed out. Every character has a journey. So it's, I believe, a very good time for actors to be. Yes. करेक्ट. Yeah. और ये सब एक्टर्स के लिए नहीं, इट्स अ वेरी गुड टाइम इवन फॉर द ऑडियंस, बिकॉज यू नो हमारे प्लेटर में भी वी गॉट सो मच टू वॉच फ्रॉम एंड सच गुड कंटेंट, तो यू नो फॉर अस आल्सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. अच्छा, लेकिन आशीष, आज के दौर पे आपको बहुत जगह देख रहे हैं, यू नो फिल्म्स में हैं, माशाल्लाह से वेब सीरीज में है, एड्स में है, सो यूर अ फेस नाउ दैट पीपल रेकन विद. पर ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक्टिंग का कीड़ा शुरू से था और यू हैड अनदर थिंग प्लान्ड एंड देन एक्टिंग हैपेंड? शुरुआत तो एक्चुअली सिनेमा इतना पावरफुल मीडियम है. जब बचपन में हम थिएटर में फिल्म्स देखने जाया करते थे, जब हम किसी को देखते थे विच इज लाइक 10 times द साइज, एक इमेज पूरी ब्लो अप होके आ रही है, वहां पे शाहरुख खान साहब खड़े हैं, अमिताभ बच्चन खड़े हैं, एंड सो इन अ किड्स माइंड सबकॉन्शियसली वो डेवलप करता है वो अंदर कि इट इज सो पावरफुल. फिर शुरुआत तो जैसे होती है हैप्पी बर्थडे में मिमिक्री करते हुए, फिर धीरे धीरे स्कूल में थिएटर करना चालू किया. जब फिर आप स्कूल के स्टार बन जाते हैं, जब आपको टीचर्स भी थोड़ा ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देते हैं बिकॉज आप एंटरटेन कर रहे हैं उनको स्कूल में. तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी. बट देन आई वेंट टू कॉलेज एंड इन माय कॉलेज देयर इज माय ड्रामेटिक सोसाइटी कॉल्ड द प्लेयर्स, ये रोडीमल कॉलेज से है दिल्ली में, व्हिच इज वन ऑफ द बेटर एमेच्योर थिएटर सोसाइटीज इन द कंट्री. So that is where I started to take the craft of acting far more seriously. तब समझ में आया कि खाली शक्लें बनाना एक्टिंग नहीं होता है. So तब पता लगा आप कितने पानी में हैं. Correct. So then I started understanding text. Text का मतलब क्या होता है? How do you interpret text? And started to work on the craft of acting. फिर समझ में आया कि फिल्मों में जाना है, तो फिर मैं FTI चला गया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जहाँ पे फिल्म एज अ होल, फिल्म एज अ मीडियम को समझने में काफी ज्यादा वहाँ पे पढ़ाई करी उसके लिए. एंड देन बॉम्बे हैपेंड. बट या दैट्स बीन क्वाइट अ जर्नी. यस. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जनरली जो लोग दिल्ली से बॉम्बे आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ. जनरली क्या होता है जब हम छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, जैसे आई बिलोंग टू स्मॉल हिल स्टेशन, में पहली बार जब दिल्ली गई तो मेरे अपने यू नो एक ओपिनियन था, अरे इतना कल्चरल शॉक लगा, छोटे से यू नो पहाड़ से होके यहाँ आप आ गए. दिल्ली अपने आप में एक मेट्रो है, हमारे देश की राजधानी, बट फिर भी दिल्ली से बॉम्बे जब लोग जाते हैं तो काफी डिफरेंस है कल्चरली. तो ऐसा आपको कुछ लगा कि अरे यार ये तो बड़ा अलग ही शहर है? मेरे लिए वो ट्रांजिशन रहा एक्चुअली. डायरेक्ट दिल्ली से बॉम्बे नहीं आया, बीच में पुणे तो महाराष्ट्र में मैं था काफी टाइम तक. हाँ. सो पुणे में भी मैंने 3 साल बिताए. आई लाइक बॉम्बे. आई मतलब आई लव दिल्ली. दिल्ली इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. दैट्स वेयर आई बिलोंग फ्रॉम. But Bombay, because I work in the city, I've been here for the past 10 years. I love Bombay. I love the culture. I love, it's safer. It's safe for women. Yes. It's safe for everyone. Like you can roam around in the nights, and this uh, people are far more freer and accepting here.
and plus all my friends and now my family has also moved to Bombay. So now, like, people make places. Like, my people now are in Mumbai, so Mumbai is my city. I love it. करेक्ट, आई एग्री विद इट कम्प्लीटली. और एक और भी बात है ना, ये थोड़ा सा अपना सा बना लेती है आपको. जी 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 जी. It's very accepting, way because, like, yeah, the city welcomed me with open arms. ओके, अच्छा, बट बीच में आपने कास्टिंग भी की ना, कास्टिंग डायरेक्टर भी आप बने. Now I need your help. I want your show to get this label off me. I'm not a casting director. ओके, So ओके. ऐसा कि मैं एफपीआई में जब पढ़ रहा था तो मेरे एक सीनियर थे जो एक फिल्म बना रहे थे, तो उनके लिए मैंने दोस्ती में जाकर कास्टिंग कर, मतलब ओके. पंजाब में हम शूट कर रहे थे, कुछ नॉन एक्टर्स को कास्ट किया, तो तब से वो गूगल ने कास्टिंग डायरेक्टर का लेबल पकड़ लिया है. सो आई एम अरे, नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर. तो अभी भी जब अतरंगी रे के बाद लोग मुझे थोड़ा ज्यादा जानने लगे, तो जाहिर है कुछ लोग गूगल कर रहे थे, तो कास्टिंग डायरेक्टर लिखा हुआ आता है. सो आज सुबह भी मुझे 2 एक्टर्स के प्रोफाइल आए कि सर कुछ काम हो तो बताएं. एंड आई आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, अगर आपके पास हो तो आप मुझे बताएं. तो बिकॉज़ आई एम नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर. तो चलिए, अब सो हमारे माध्यम से हम जानकारी दे देते हैं गूगल को स्पेशली कि आशीष इज प्योरली एन एक्टर हु इज इनटू दिस आर्ट, और वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, तो कृपया ये हटा दिया जाए. थैंक यू मैम. ओके, बट अगर हम काम की बात करें, आप किस तरह का जॉनर आपको पसंद है, किस तरह के रोल्स आप चाहते हैं दैट आपको मिले, बिकॉज आई थिंक नाउ यू आर ऑन दैट लेवल जहां यू कैन डिमांड फॉर रोल्स, आस्क फॉर रोल्स. um like, as an actor, I would like to explore every genre. I do not want to restrict myself to a particular genre. uh, I've been in the past given a lot of roles which have got a slight comic bent to it. And I can also understand, like, it's very easy to typecast actor as per their body type, how they look. But slowly the trend is also changing. I'm just doing a show, I cannot talk about it much right now, but which is a part which I've never done before in my life. So I've been very lucky that ways to explore genres of different kinds now. And even Whistleblower, the role which I did, which was of an investigative journalist, was very different from what I did in Atrangire, who was a quirky doctor. But Whistleblower was a serious journalist who's hell-bent on finding the truth. So thankfully, like, people are also becoming far more imaginative and risk-taking and giving actors opportunities to play different kind of characters. Correct. So you're open to doing anything in every kind of genre as long as it makes you happy. Yeah, as long as it's, I'm more interested in a story. If the story is great, I would like to be a part of it. Great. So if whatever that the larger picture that we are saying, and if I help in contributing, like in Article 15, I played a very small part. I was playing Ayushman Khurrana's PA. But the story was so powerful, and it was Anubhav Sinha. Who would say no to that? Correct. करेक्ट. सो आई होप एंड रियली प्रे कि आपको इस तरह के और रोल्स और ऑफर्स आते रहें. बट आशीष, अभी तक की अगर जर्नी की बात करूं तो हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद इट एंड हाउ डू यू सी इट आपके पर्सपेक्टिव से? I'm very happy because I love acting. I love acting as a craft. So we used to do the same thing from school, from college, and now people are kind enough to give us money for it. So I was having fun in school, I was having fun in college, I'm having fun right now, and now people are willing to pay me for that. So it's yay. All right. So what next? Can you say or reveal any of your next upcoming projects? The upcoming project, I'm shooting something with Homi Adajanya. It's a web show. Hopefully more details would come out soon. And something which is releasing, which I want you all to watch, that's coming on the 21st of January. It's called Unpause Season 2. Correct. And if you have seen Season 1, it's about stories of the lockdown. So these are, it's an anthology of short films, 4-5 short films हैं. Correct. जिसमें से आप एक कर रहे हैं. जी जी, उसमें से एक मैं कर रहा हूँ, 3 तिगाड़ा उसका नाम है. एंड मेरे ही एफटीआई के बैचमेट रुचिर अरुण उसको डायरेक्ट कर रहे हैं. वाह. तो काफी इट वाज लाइक होम ग्राउंड. तो अपने घर वालों के साथ ही हमने मिलके सारे एफटीआई के बैचमेट्स, मतलब साउंड इंजीनियर भी एफटीआई का मेरा बैचमेट है, एडिटर भी एफटीआई की मेरी बैचमेट है, साकिब सलीम एक्टिंग कर रहे हैं मेरे साथ. सो होपफुली पीपल विल लाइक इट. इट्स अ वेरी वेरी नाइस फिल्म ऑफ कंपेनियनशिप, which we all need right now.
So we will watch out for that and hopefully उसके प्रमोशन के लिए भी शायद हम एक बार फिर से इंटरव्यू करें, एक बार फिर से मुखातिब हो बातें करें. बट आशीष जैसे बहुत सारे लोग हैं who aspire to become actors और उनकी ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं बॉम्बे, बट कई बार निराश हो जाते हैं. अगर हम इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद करते हैं स्पेशली इन दिस फील्ड और वो नहीं मिलती, हमको लगता है अरे हमारे शायद अंदर टैलेंट नहीं है या फिर ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, एंड देन पीपल लूज होप एंड गो बैक. तो कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से आप ऐसे लोगों को देना चाहें who want to aspire to do this but they should sustain? I think it's all about being consistent. It's about consistency. You have to be at it. And also what is very important is to have the intention, the correct intention behind choosing the craft of acting. Like it's very easy, लोग भटक सकते हैं पैसा और ग्लैमर बिकॉज इतना अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव लगता है. करेक्ट. वैसे भी इंस्टाग्राम पे चीजें ज्यादा सुंदर लगती हैं एज कम्पेयर टू असल जिंदगी में जैसे होती हैं. तो it's not all glamour and hunky dory. It's if we have to become actors, we have to, मेरे लिए ऐसा मानना बहुत जरूरी है, या तो आप एक फॉर्मल एजुकेशन लें, बिकॉज अगर इफ यू चूज अ प्रोफेशन एंड यू वांट टू do this for the rest of your life, it's very important to study that, be Correct. it through a course, be it by your life experiences. But you need to be very honest to the craft of acting if you want to become an actor. अगर हम खाली हवाबाजी के लिए आते हैं then वो हमारी फाउंडेशन ही ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डगमगाई हुई होती है. Then okay, if you've started, you're a great actor, that also does not guarantee that you'll get work. I know a lot of actors who are brilliant but they're still trying to find their footing. But again, it's about being consistent and being at it. All right. So may you keep being consistent. May you keep entertaining us like this. आपको जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो सारे ऑफर्स आपको आए, आपको सारे रोल्स मिले और ऐसे ही हम उनके लिए फिर ऐसे इंटरव्यू करते रहे. So I wish you all the luck, Ashish, for your future, anything that you take up, and thank you for this interview and stay safe. Thank you very much, Nidhi. Thank you very, very much. Thank you. Lovely Bye-bye. time. Bye. Bye.